उसे करना चाहिए। और आप सभी लोग इस चीज से भली भांति परिचित हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सारी सेक्शन सीआरपीसी के जो ओल्ड में थे, न्यू में थे, ये सारी चीजें विक्टिम के लिए हैं। इनका यूटिलाइज प्रोसिक्यूटर करता भी है। जो दूसरी बात है, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना, लीगल एडवाइस भी प्रोसिक्यूटर करता है निश्चित रूप से। मैं आपके लिए इसको, चूंकि अगले स्पीकर्स इस पे बोलेंगे, मैं उन टॉपिक्स पे आपसे डील करना चाहता हूं जो नए हैं, जिनके बारे में हम विचार सकते हैं। तो सबसे पहली और बात जो आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, या जिस चीज को सजेशन के रूप में मैं पहुंचाना चाहूंगा, वो ये है कि लीगल एजुकेशन विक्टिम के लिए जुडिशरी बिल्कुल आपके क्लिनिक लगाती है, आपका जो है शिविर लगाती है, विधिक साक्षरता शिविर लगाती है, तो ये प्रोसिक्यूटर के लिए क्यों ना हो। हम देखते हैं कि हमारे जो एक्विटल का जो रेट है, उनमें से अधिकतर चीजें इसलिए हमारी जो है, हमारा जो दोष मुक्ति हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि गवाह को पता नहीं है ये सही कहना, ये कहना गलत, ये कहना सही, ये क्या हो रहा है। बोले मैं तो सही बोल रहा हूं, ये गलत क्यों बोल रहा है। इस चीजों को कि कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या है, किस प्रकार उसे अपना डिपोज करना है, किस प्रकार उसका कथन देना है, क्या चीज होती है, क्या किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलने से क्या नुकसान होते हैं। वो आदमी तलवार से मारा है तो उसको और बंदूक से मारना बताएगा, और इसी का फायदा कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन में वकील ले जाएगा। ये सारी एजुकेशन यदि प्रोसिक्यूटर के माध्यम से होगी तो निश्चित रूप से एक जो लीगल अवेयरनेस जो आपकी विक्टिम की है, वो उसे फायदा मिलेगा, उससे जस्टिस के रूप में। तो जो मेरा फर्स्ट सजेशन कि इसमें आप जो है लीगल एजुकेशन के लिए, एक आता है आपका एविडेंस के लिए, जो कि एक नवाचार हमारे डायरेक्टर मंगलम साहब के पहले एक हुआ था, डायरेक्टर मंगलम साहब ने भी उसको चलवाया था। एक था विक्टिम हेल्प डेस्क। जब साक्षी आए तो उसके लिए कोर्ट में एक प्रॉपर रूम हो, एक प्रॉपर व्यवस्था हो, जहां वो आके बैठ सके। अभी क्या होता है, उसे आरोपी जहां है, जहां आरोपी घूम रहे हैं, वहीं खुले में उसे बैठना होता है। उसको पता नहीं है कि कहां जाना है, किस कोर्ट में उसकी गवाही है, उसका एडवोकेट कौन है, कौन उसकी ओर से अपियर हो रहा है, उसका केस क्या है। कई बार ये होता है कि नंबर ऑफ केसेस आर देयर, 2-4 बार पीट दिया, मेरे कौन से वाले केस में गवाही है, उसको वहीं जाके पता चलता है। वो जब देने लग जाता है बयान, तब प्रोसिक्यूटर याद दिलाता है, नो नो नो, आपकी गवाही तो इसमें हो रही है। तो ये चीज से बचने के लिए एक जो चीज हम कर सकते हैं, विक्टिम हेल्प डेस्क या विटनेस हेल्प डेस्क के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। एक और चीज है कि जैसे डायल 100 है, 108 है, एक विक्टिम हेल्पलाइन बनाई जा सकती है, जिसमें हालांकि नए सीआरपीसी में राइट टू नो चूंकि इतना बार बताया गया है, परंतु इसको मौके पर फील्ड पे करने के लिए एक विक्टिम हेल्प डेस्क जो उसके केस के बारे में उसको डिटेल बता सके कि क्या चल रहा है या किस प्रकार से चीजें होती हैं, ये इस जानकारी को देने के लिए हम इसमें जो है आप विक्टिम जो है हेल्पलाइन नंबर जारी कर सकते हैं। आप लोगों का कंसर्न समझ रहा हूं, जब उस चैलेंज पे आऊंगा तब उस पर भी डील करूंगा कि आप कहेंगे कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ की जितना काम है उतने के लिए नहीं है। आता हूं, उस पर भी आता हूं चैलेंजेस पे, तो हम इसके लिए कर सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि समय कम है इसलिए इसको शॉर्ट में डील कर रहा हूं, तो विक्टिम कंपनसेशन होता है। विक्टिम कंपनसेशन और विक्टिम प्रोटेक्शन, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर स्टेट में है, पर जो मेन अथॉरिटी है जिससे विक्टिम सीधे जुड़ा हुआ है, वो इसमें एक हाशिए पर है। भाई प्रोसिक्यूटर को विक्टिम कंपनसेशन में क्यों नहीं प्रेसिडेंट बना रहे? जो विक्टिम से जुड़ा हुआ है, जो सीधे उसके जानता है कि कौन इस विक्टिम में क्या चीजें हैं, उससे वो साइडलाइन करके किसी कमेटी का केवल मेंबर बना के आप क्या हासिल करेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि यदि ये वाला दायित्व, क्योंकि वैसे ही हमारी कोर्टें ओवरबर्डन है, तो विक्टिम के लिए, प्रोसिक्यूटर के लिए जो चूंकि जानता है, इस चीज को समझता है, तो ये जो कंपनसेशन का और प्रोटेक्शन के लिए भी जो है हमारे प्रोसिक्यूशन को जो है इसमें दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ नई चीजें थी, बाकी मेरे साथी बताएंगे। अब मैं आता हूं मूल समस्या पे कि चैलेंजेस। सर प्लीज कंक्लूड इन। बिल्कुल बिल्कुल सर, चैलेंजेस तो बहुत जरूरी है, बिना चैलेंजेस के काम नहीं चल पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में खत्म कीजिए सर। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। प्रोसिक्यूशन को हम देखें तो आप प्रोसिक्यूशन में 2 साल के वाले जो आपके हैं वो लोग भी प्रोसिक्यूटर हैं, जो रेगुलर कैडर से आया वो भी प्रोसिक्यूटर है। अब बात ये आती है कि यदि किसी को विक्टिम के लिए ट्रेनिंग दी जाए, तो फिर 2 साल वाले को यदि हमने ट्रेनिंग दी तो निश्चित रूप से ये लॉस है।
ये सरकार के पैसे का लॉस है। यदि रेगुलर कैडर से ही पूरी दूर आप इसको कर रहे हैं, उसी को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी से आप यदि चीज कर सर हम रहे हैं, विक्टिम की यूनिफॉर्म- बात कर रहे हैं या प्रोसिक्यूटर को विक्टिम मान रहे हैं? सर विक्टिम को करने के लिए चैलेंजेस हैं हमारे। विक्टिम को जब हम पेश कर रहे हैं तो हमारे मतलब पास स्टाफ की प्रोसिक्यूटर कमी को है। स्ट्रेंथन करेंगे तो विक्टिम को स्ट्रेंथन हो जाएगा। जी नहीं सर, हाँ। यदि हम लोग होंगे तब तो हम विक्टिम की मदद कर पाएंगे सर। यदि हमारा point स्टाफ आपके कम होगा। प्रोसिक्यूटर के लिए है ना, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन व्हाट? नो नो, किसके? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हाँ प्रोसिक्यूटर्स की यूनिफॉर्मिटी है, और उसमें जब हम एक होंगे तब हम ट्रेनिंग दे पाएंगे, वो आपका प्रोसिक्यूटर को बता पाएगा। जी। अगली है समस्या मैन पावर की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लैक ऑफ जो है आपका फ्रीडम है। अभी जो नए अमेंडमेंट में जो जुडिशियल ऑफिसर्स को आपका दिया गया मौका, तो यहां पे कहीं ना कहीं फ्रीडम की बात आती है कि यदि आपकी अपील, जिसको आपको अपील करना है जिसके खिलाफ, वही अथॉरिटी, यदि आपका ये डिसाइडिंग अथॉरिटी होगा कि अपील की जानी है या नहीं की जानी है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ बायस होने की संभावना है। मैं थोड़ा समय लूंगा सर। आप देखिए कि एमपी में जो हाईकोर्ट में अपील होना है, विधि विधायी विभाग से होती है 323 378 के कारण, कि चूंकि अवेलेबल एंड उसमें शब्द लिखा है नॉन कॉग्निजिबल वाला, उस एंड के कारण 323 की अपील हाईकोर्ट होती है, थ्रू विधि विधायी विभाग जाती है। अब विधि विधायी विभाग में यदि जो आपका जुडिशरी से बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि उसे हाईकोर्ट ये ना कह दे कि आपने जो है पेंडेंसी बढ़ाने के कारण इसको कर दिया, 90% ऑफ अपीलें डंप हो रही हैं। आप चेक कर लीजिएगा रिकॉर्ड कि अधिकतर अपीलें हाईकोर्ट में नहीं पहुंच रही हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो चीजें आपकी जो फ्रीडम है ये दिया जाए। जो एक्ट कांग्रेस जो हुई थी, जो आपका यूनेस्को का जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो किया जाए, जिसमें ये फ्रीडम ऑफ इसकी है। ठीक है सर, इसमें पॉइंट वेल टेकन सर। ओके अब हम सर, conclude करें। केवल कंक्लूड पे आ रहा हूं। लास्टली मैं आपको कहूंगा, यदि डेफिनेशन की बात करें प्रोसिक्यूटर की, तो बड़ी 4 लाइन ही है, बस हो जाएगा खत्म सर। बिना गणवेश भत्ते के, बिना यूनिफॉर्म भत्ते के, जो रोज यूनिफॉर्म पहन के जाता है, बिना वाहन भत्ते के, जो एसपी, कलेक्टर और कोर्ट के चक्कर लगाता है, लघु आवासीय भत्ते में, लघु भी इतना लघु कि आपको कोई टॉयलेट भी किराए पे ना दे, लघु आवासीय भत्ते पे जो अपना आवास सजाता है, बिना सुरक्षा व्यवस्था के दुर्दांत अपराधियों से भिड़ जाता है, कम स्टाफ, कम वेतन, कम संसाधन में जो विक्टिम और सरकार का पक्ष रख जाता है, इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभियोजक कहलाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लास्टली मेरा निवेदन है इस मंच के माध्यम से, विक्टिम तो खैर बन ही रहे हैं सर। लास्टली मेरा निवेदन है, आप कितना ही अच्छा बीज रख लीजिए, आप कितना ही अच्छी जमीन देख लीजिए, यदि आपने किसान को फ्रीडम नहीं दी, यदि आपने किसान को मजबूत नहीं किया, तो कोई फसल आप इसमें पैदा नहीं कर पाएंगे। वो सारे अच्छे बीज, वो सारी अच्छी जमीनें आपकी धरी रह जाएंगी, यदि किसान आपका मजबूत नहीं है। वो किसान है पुलिस जो बीज बोती है, और प्रोसिक्यूशन जो उस फसल को पकाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच उपाध्याय सर, बहुत ही अच्छा आपने बोला, और जो बातें हैं बहुत गहरी हैं, समझने वाली है, महसूस करने वाली हैं, और उस पर बहुत जल्द उम्मीद करता हूं कि कार्य होगा। अब हम नेक्स्ट टीम की तरफ आ रहे हैं। आपने सर मुझे लास्ट में भेजा था, जस्ट अ सेकेंड। ये जो पीपीटी लेट भेजते हैं ना, उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। टाइम से अगर मिल गया होता तो प्रॉब्लम नहीं था, तो हमारे पास लेट आया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सूर्या तुमने भेजा था ना? हाँ, ग्रुप में इससे मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ओके ओके ओके, स्टाफ में देख लेते हैं।
ये तो उसमें कॉन्फ्रेंस में है ही नहीं ना, दिक्कत ही है, स्टाफ में दिक्कत है। यस मैम, आगे आगे आ जाइए सर। ये वही वाली दूसरी वाली है? सर वही है जो आपने हमको दी है। नहीं, एक पहले भी थी। अरे आ जाइए सर, इतना परेशान मत हो। चलिए यहाँ से इससे हटाऊँ। So good afternoon. I have been assigned topic on role of prosecution in victim justice. I am Kamal Sharma from J&K Prosecution. So, as all we know, the journey of victim starts with the commission of crime and its reporting also. So, there are two scenarios in reporting. One is that if the crime is reported, then the journey starts. It moves ahead, and if it doesn't report, then it starts there. It stops there. Reporting a crime to the relevant authority is the first step in the victim journey of seeking to achieve justice through criminal justice system. This is I am generally talking about. It is important that the initial interaction with the victim is a positive experience. Yes, it's very important that the victim should have a positive experience right from the reporting stage. Then next is the prosecution, then the judgment stage. So positive experience is very important. The effective role of the prosecutor in criminal justice system starts with the filing of charge sheet against the accused. Bail is an exception, as we all know it. In the bail also there is the interaction also there, the role of prosecutor is there, but effective role starts with the launching of prosecution, that is filing of the charge sheet. So, and the interface with the victim starts with when the victim is summoned. So this is the journey of the victim and the role of prosecutor begins. So first and the foremost duty of the prosecutor is that he should defend the victim just like the accused is defended by the defense counsel. Same professionalism is expected from the prosecutor also. So this is there. I am sure that all the prosecutors exhibit this professionalism also. That's why what has Mr. Upadhyay has quoted in the last couplets. So those are very true also. Without in the minimum infrastructure we work, in the minimum infrastructure without security, there is a battery of lawyers on the other side, and the only lone prosecutor standing up and saving and fighting for the victim, you know. So this is the scenario in the courts, as judges also know it. First and the foremost for the criminal justice system and for imparting justice to the victim is empathy. If there is no empathy at all, the victim will not be able to get the justice. So this is the first and the foremost thing which is required. Then preparation of the victim for the deposition also. When the victim comes and he has interfaced with the prosecutor, first and the foremost that he should be made aware of the legal phraseology, and all the privacy should also be ensured. Legal phraseology, what is going to happen in the court also, what scenarios he will be facing, what battery of lawyers he will be facing through cross-examination, how he will be intimidated, how he should answer the questions also. This all should be prepared by the prosecutor also, and there is a enjoined duty on the prosecutor also that to save the victim from scandalous questions, though it is there in the Evidence Act, but still it should be ensured that victim is not intimidated, he is not, scandalous questions are not put to him, and his privacy is not violated also. I am not talking of POXO Act. I am in general terms I am talking. This is, I am deliberating on the general topic. This is, I am, in the end I'll come to that also. Vulnerability of the victim should be reduced, solaced from the, as we all know it. Mr. Upadhyay has rightly pointed out, when the victim comes to the court, he has no place to sit. He is, there's an accused and his coterie is standing on the one side and the victim is standing on the other side. He is intimidated there also by the body language, exhibited by the accused and all the person. There only the fear psychosis starts in his mind. And from there, he is snubbed, and in the court, he is
snubbed totally. So the majority of the cases where we lose is also this one of the reason is that this is this one also. We should always specify that then whenever the court there is a word called court tactics. So court tactics, when the case is strong, the defense always comes plays the tactics, delays, repeated summons, repeated summoning of the victim, repeated not cross-examining him. Then if he starts cross-examining, then he'll ask for the adjournment that, oh no, I have not prepared, or many other reasons he'll specify there. So this all should be discouraged in order to ensure justice to the victim. Then another suggestion was that, yes, because social background as well as the social background of the victim as well as the accused is very important to be known. It should be known to the prosecutor. Why? Because he will then be able to. Sir, last minute, sir. Then he'll be able to make out that how the crime was committed and under what circumstances the crime was committed. This is very important. So social background of both the victim as well as the accused is it should be known also. Then ensure that the bail application is defeated. Victim briefing is very important for the prosecutor. Ensure that the compensation of the victim is disbursed and maximum quantum is fixed. Legal language barriers. Yes, this is also one of the. We were talking about katori bhardi. Yes, there is a one katori bhardi wale one of the example given by someone in our group also. Katori bhardi. Katori bhardi means in Gujarati, in Rajasthani it means hugging, and in Punjabi it means that filling the bowl. So this is the difference. So language barrier is also there. Language barrier should be it should be removed. As we in Jammu and Kashmir, there are many languages. Yes, sir, point well taken, sir. We can go to the suggestions. Yeah, I'm going to say, this is my last slide, sir. As in Jammu and Kashmir, every 10 kilometers, 20 kilometers, there is one language, So there is also a language barrier. So one has to ensure what the victim says, and how it is rightly interpreted also. So this has to be ensured, Then should be above the, aggressive body language shown by the, defense counsel towards the victim. This is also one of the things. This should be also, discouraged. This should be discouraged. When the victim, this should be depreciated. Should be about personal prejudices and ensure justice to the victim. Now suggestions. On the analogy of the POSCO Act, the victim should be made aware of all the proceedings of his or her case, including the investigation. This is one thing. Proper infrastructure backup. I support what Mr. Abode has said. Proper infrastructure backup to ensure that the victim is not pounced upon by the defense. Then one dedicated parvy officer, nodal officer, holding officer should be nominated so as to liaise with the PP on behalf of the victim also. Dedicated prosecution service with institutional and infrastructural background. This is very important. This is, as we all know, there is a reform in police, there is a reform in judiciary, but where are the reforms in prosecution? So reforms in prosecution are on anvil. So this is very important. If you want to move the whole of the wheel, and if you don't energize, or if you don't make powerful the one of the tool also of the criminal justice system, then all of the criminal justice system will collapse. So this is my final way. Summons, yes, summons issued for the attendance of the victim should specify the time, place, and officer to meet. Which officer to meet? This summons should specify. You come at this time, and whenever the victim comes at that time, even the witnesses come to the court at that time, he should ensure that he is recorded at the given time. His statement is recorded at the given time. Place and office or to whom to approach. This should also specify. Forced adjournments during cross-examination. This should be discouraged. Minimum attendance, like I said, that number of times the victim is called, then he gets discouraged also. Then it is ensured that he doesn't depose also. वहाँ पे तब तक नहीं वो उसको चलता रहता है वो. Then comforting room also should be there. So crowding in the courts during examination should also be controlled. So this is, thank you. I finished with my points. Thank you. Thank you, sir.
ऐसा अच्छा आपका पीडीएफ है ये क्या है जो आप लोगों का भेजा वही है रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन लिस्ट यही है ना क्या है? यही आपने शेयर किया ग्रुप सी में ग्रुप सी का हमको यही मिला है सर नो इशू यू कैन एक्सटेम्पर आप बोल दीजिए जो भी आपके व्यूज है पेन ड्राइव Don't worry, sir. Meanwhile, we can invite the last speaker. कर देते सर मैम आप आ जाइए कब तक कोशिश कीजिए 5 मिनट स्लाइड चेंजेस भी कर सकते हैं इससे भी कर सकते हैं Good afternoon, one and all present. Johar greetings to all. That is how we greet in Jharkhand. I am Nikhar Baranwal, Assistant Public Prosecutor, serving in the state of Jharkhand, rich in humble people and minerals. Of course, we all know. My group D has put a lot of efforts in confining ourselves to our different topics. So I am just going to constrain myself towards the role of prosecutors. So we prosecutors are middle berth. Like just in the train, we are the middle berth between the police investigation agency and the judiciary, right? From the filing of charge sheet, the police works is mostly completed. And then until the judgment is pronounced, every entire duty, how the trial is going to be conducted, how prosecution is going to be conducted, what petitions to file, what rejoinders to be filed, how we are going to discover the truth and let it shine through the court is the duty of the public prosecutor. We move the court through all possible petitions. I like as judges, you must have received, as prosecutors, we have filed, as investigation agencies, you must like know that how rejoinders, applications 311, 319 and 242 subsection 2, where on application of the prosecution, the magistrate may summons any of the witnesses to ensure its attendance, produce any document or thing in favor of the trial. Then filing of documents to proving them. Very important, immensely important step in the trial that prosecutor has the entire discretion as to what documents are going to prove what facts. And this is upon us. We all are aware of section 165, 166 of Evidence Act. We have to assess the importance, the significance of the documents, and that is how we file to the court, and that is how we substantiate with judgments, with deposition of witnesses, and that is how we are able to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, as it is required for the relevant judgment in our favor. Then examination of witnesses. See, I see examination of witnesses as an art, right? Cross-examination is not the only art that we see in the trial. We have people of India who lack education, who lack comfort, who lack security, and then complete devoid of legal procedure, the legal acumen, the legal knowledge. And then we are bound to get illicit truth from them before the court, where they are unaware of COAT court and completely unaware of COURT court. And those witnesses have to explain, I'm so sorry, they have to explain as to what they have undergone. See, the problem also lies that they are not even able to, as for sexual assault, let's say, let's talk about sexual assault cases. Women are not able to say that they have been raped. Sometimes they just say, sir, galat ho gaya mere saath. How does the court know? How would the court know whether it was just outraging modesty or it was actually rape? Witnesses are not able to express themselves, and that is where the heavy burden lies on the shoulders of prosecutors, because then we have to make them speak what they've undergone, and that takes a lot of courage. I can tell that. Then we are prosecutors and not persecutors. Persecutors, we don't have a responsibility of let any accused go punished. We are not here to hang them or put them into jail. We are only helping the judiciary to find, to discover the truth. We are only aiding them in the entire process. And for that, we have some tools. I have generally found in various discussions that people say the depositions are our weapons. They are not weapons. We are not fighting in the court, my friends, ladies and gentlemen, honorable dignitaries. We are not fighting in the court. We are aiding the court.
we are forming something. We are, if the punishment is there, if the accused goes punished, this is because he has done some wrong. So these are our tools, these depositions, these evidences, these are our tools, and we are into forming some structure. Then prosecutors are the gateway to criminal justice system. The accused gets all his right to engage a good counsel. But for victim, we are the counsels. We represent them, and state has appointed us to showcase our best advocacy skills and always put the best foot forward. And therefore, heavy responsibility again lies on our shoulders, because that requires legal acumen, a very good experience, and a humble heart and empathy. Proactive prosecution, yes. See, our duties are nowhere defined. They are not in the CRPC. Sometimes we gather it from police manual, let's say. But we need to understand that proactive participation in the trial, making witnesses speak, sometimes helping them, tutor them, and then comfortably making them speak before the honorable court, and then sometimes get their demeanor also record and let it shine in the eyes of law, in the eyes of court, so that they also record it. Because it is us who is understanding the barrier in the language, barrier in the understanding, barrier in the gap of understanding between us and the witnesses. We have to make it highlight before the court to win our case. And then appreciation of evidence during arguments. I understand the defense counsel only has maybe 5-7 cases in the entire day, but as prosecutors, we literally have to deal around 50 court records every day. And sometimes we have 10 witnesses to chief examine, and then 4 arguments in another court. I understand we cannot be expected to do 100%, but then yet we should try our best efforts. We should endeavor that during arguments we are able to appreciate the evidences, because we have read Evidence Act. We know how ordinary transactions, the regular courses, the conduct, the motive, every smallest of the circumstances, how they are helpful in forming the chain. That chain is complete, which is specially mentioned in the Birdi Chand Sharda case, where the circumstantial evidences need to form the whole chain. So that appreciation of evidence must be there, so that we are able to prove our case beyond reasonable doubt. Then our duty does not end when the acquittal or conviction is announced. Our duty goes beyond. We, as advocates of our victim, have to inform them about their rights to appeal and help them in filing the appeal, and then the way forward. Lastly, initiate the victim compensation scheme before the court. The rights that victims have got under section 357A CRPC, we are the ones who initiate it. We are the ones who write to the court that the victim deserves compensation. We are the ones who say that under the doctrine of parens patriae, where the state is the guardian of its people, we are to put it forward to the court that they deserve some compensation. And at last, I conclude my presentation here. Johar once again. Thank you. मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि मैम के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैम ने अभी सिर्फ 3 महीने की नौकरी की है, जस्ट 3 मंथ्स ऑफ सर्विस, और मैम का कमिटमेंट और डेडिकेशन आप देख रहे हैं। तो हाँ जोहार, जय जोहार। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। अब मैं लास्ट ऑफिसर फ्रॉम दिस सर, आप यू हैव टू स्पीक एक्सटेम्पोर, जस्ट 5 मिनट में आप अपना व्यू रख दीजिए सर। उसमें टाइम लग जाए सर, वी डोंट हैव टाइम। तो फिर हम लास्ट में रख लेंगे, लास्ट में रख लेंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। इसमें टाइम लगेगा ना, ब्रेक होगा तो कर देंगे, लास्ट में हम बुला देंगे उस टॉपिक के लिए। पहले से ही टाइम डिले बोलो, टाइम लगेगा ना उसमें। फिर डाउनलोड करोगे फिर करो, कैसे डाउनलोड नहीं इधर है, ओपन कहाँ है बताइए, किस में डालें? सी ग्रुप सी है ना, तो हम पिछली बार भी यू हैव ओनली 5 मिनट्स। या हाँ ना टाइम से तो देते नहीं अंदर चल ओके।
Officers, good afternoon. Thank you so much for giving this opportunity. I am Daniel Kumar, Assistant Public Prosecutor from Hyderabad, Telangana. And thank you so much to my Director of Prosecution, Telangana, and myself and Satyanarayana sir, both are nominated Sir, to this please, conference. we don't have time for introduction. Just Yes, yes. start. So I am going to explain about the role of the public prosecutor. Actually, I have collected so much of material, but there is no time to explain each and every topic, every point as such. Sir, who is public prosecutor? It is clearly explained by the Supreme Court. In number of judgments, the role of the public prosecutor was explained. The Supreme Court has given much priority to the public prosecutor while discharging his duties in delivering of the justice to the victim. So only one or two judgments I will refer you, sir. So Harendra Rai versus the State of Bihar. In this case, the Honorable Apex Court clearly gave an importance to the public prosecutor. The Honorable Supreme Court stated that all the times the public prosecutor is the Minister of Justice. So we have given such priority. So as such, public prosecutor has to discharge his duties in a fair manner and justice to be done to the victim. There should not be any delay in the delivery of the justice to the victim. So I suggest to the authorities that the justice, the victim has to give the much priority even from the date of commencement of the investigation. So at the time of preparation of the 161 statement of the victim, even the investigating agency has to take the advice from the public prosecutor at the time of preparation of 161 statement. Because the statement is not properly recorded, definitely the case is going to be acquitted in the court of law because there will be many contradictions and omissions at the time of deposition of the victim. So, every stage of the trial of the case, from the date of commencement of the investigation till the conclusion of the trial, the victim has to be given much priority and the public prosecutor has to take the help, and like that the justice can be done to the victim. After filing of the charge sheet, the first stage, the public prosecutor has to brief the victim by invoking section 159 Indian Evidence Act. So without briefing, the victim should not be entering into the witness box for giving her testimony. So much priority to the given for briefing of the witness. Sir, last minute, sir. So there is a delay in delivery of the justice and there should be speedy justice to the victim. So delay, there should not be any delay while delivering the justice to the victim. So my sincere advice is, without so much priority should be given to the rights of the victim. That there are rights of the victim, there are many rights guaranteed by the Constitution of India. So the public prosecutor has to ensure that all the rights are satisfied by the victim. So these are the rights: the right to speedy trial and right to privacy, right to treat with the dignity and respect, and right to compensation, right to information, right to preparation in sentence process, right to restitution, right to protection. These all rights should be ensured, it should be satisfied by the victim, and the public prosecutor has to ensure that the entire rights has been satisfied by the victim. So there are suggestions from our team members. Some of the suggestions I would like to read. The Krishnamurari, a public prosecutor,
from Delhi, he suggested some of the suggestions that public prosecutor should treat the victim in a fairly and dignified manner. And the public prosecutor should go through CD file thoroughly for effective prosecution to do justice to the victim. So at the time of witness hostility, public prosecutor should more vigilant and do proper cross-examination. Public prosecutor is representing not only victim but also society at large. So public prosecutor is very crucial before victim enter into the witness box. So another public prosecutor suggested that the Washington Additional Public Prosecutor Tamil Nadu, he suggested some of the points: preliminary opinion for registration of FIR with the proper sections, scrutiny of final reports, filing of effective counters in discharge and bail applications and other petitions, recording of best evidence by giving confidence to the victim. Section 319 CRPC. Sir, I will share the presentation in the group, sir. Yeah, sure, sir. I will share. So these are the suggestions, some of the suggestions which was given by the members of the our team. Thank you so much for each and everyone. Thank you. Thank you one and all. Thank you so much, sir. Now I would like to request Mansoori sir to please come on the stage and distribute the memento to our learned speakers. Thank you so much, sir. Now I will request the next topic 3, all the 4 speakers to please come on the stage. Topic 3, all the 4 speakers, please. We'll start with group D. आपका group A है सर? Good afternoon, everyone. My name is Neil Kamal, Senior VP NIA, and the topic is role of victim in investigation. As we are already short of time, so I will try to complete all this thing within with limited periods. So, first of all, the victim definition of victim introduced in the CRPC in year 2008 by Amendment Act. And it's a very recent origin, and after 14, 15, 16 years, as our focus is on victimology, so we have to widen the definition of victim. As a victim, as per definition of victim, against whom an act or omission committed, but I want to suggest that it should be widened to include victim should be society. If offense is committed against the society at large, then this can also be included in the definition of victim. Slide चला दीजिए. Further, by UN Declaration 1985, certain rights of the victim were recognized. These are right with respect to self-respect, with to be present in all proceeding, right to rational protection, right to information during investigation trial, right to compensation. Now, victim role in investigations starts right from the stage of registration of FIR. If the copy of the FIR is not provided to the informant or the victim,
he can approach the superintendent of police. He can write to him, and if even SP denies, then the victim can consult made an application to the court who is competent to take cognizance of the offense, and the magistrate can also order investigation into offense as per section 156 clause 3 CRPC. So he has a right to free copy of FIR and other documents like challan, witness statements, and all other oral and and the victim should have the knowledge about that fact. Now Tariq has gone into abyss. Now zero FIR has been institutionalized. Now there is a provision for EFIR, and now with the introduction of new laws, a case cannot, if a prosecutor want to withdraw a case, then the victim has a say in that matter. So victim consent is also required, and forensic evidence is made mandatory in case of which are punishable with 7 years or more imprisonment, and rape victims can give e-statements recorded in their mobile in the presence of family members. Property of proclaimed offenders can be attached even during even outside India. Like this is the proclamation is made during investigation. That's why I am saying, reading all these provisions. It has been made compulsory to give response to victims after they lodge a complaint to provide them information within 90 days. Also about the progress of the trial fortnightly by SMS or other modes of electronic communication. So, finally, in suggestions, like a list of advocates who can assist support the victim must be properly maintained at police stations. For sexual offences, right of a victim to have his or her statement recorded at their residence must be strictly adhered to. Police must give assistance on-site crisis intervention. All the police procedures, court procedure must be explained to the victim by the IO, holding officer, PARV officer, or the PP concerned. If the victim is not by knowing about his rights or the procedure, how can he enforce those rights? Victim should protect the evidence during investigation, like if there is any clothes or other samples, they should be protected from this. Victim should play an active role in identification of offenders. Further, under new laws, during bail, appeal, victim got the right to be heard in the court during court proceedings. And lastly, if a translator is required, then it may be timely intimated by the victim to the IO or the PARV officers concerned. Thank you. Thank you so much, sir. Now I will request Satyanarayan sir to please come. Good evening to all the elegant participants. Thanks to my director, Srimati Vaijayanti Madam, for giving the opportunity to participate in the conference. I have given an opportunity of delivering talk on the role of the victim in the investigation. The investigation is a process searching the truth in the crime. An effective investigation by collecting oral and documentary evidence, filing a charge sheet before the competent court, which is a foundation for an effective trial, which leading into proving the guilt of the accused. The Indian dispensation of criminal justice system based on an adversarial criminal justice system where an accused is presumed to be innocent, where the prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt to prove the guilt of the accused. But that view has been slightly changed by the Honorable Supreme Court in case of Yogesh Singh in 2014. The Lordships of the Honorable Supreme Court said
it is the duty of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt. Whatever the documents which are filed along with the charge to prove the ingredient, that should be proved beyond reasonable doubt, not the doubts raised by the defense in the trial. So now the law is changing towards the victimology. Earlier, prior to 2014, we used to call it is the duty of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt. That has been changed by the Honorable Supreme Court in Yogesh Singh case, that it is not the duty of the prosecution to clear all the doubts raised by the defense in the trial. Therefore, we are all under the impression that the law is settled in favor of the accused is not correct. Law equally settled in favor of the accused. We are also witnessed in recent criminal laws enacted by the Honorable Parliament 3, where they were always concentrated towards the victimology. So judgments is guided towards victimology. Therefore, the victim is the ultimate paramount consideration to protect the victim, and the law is guided by the Honorable Supreme Court and the various high court in the country. It is towards the victim. Now, all the learned judges, honorable judges and the police officers, forensics experts are present here. Not only concentrate on collecting the oral evidence, that is 161 statement, I request all of you, the prosecution and the police officers, to concentrate on electronic, medical. There is a possibility of witness, they may resile their statement in the court. In that juncture, in a heinous crime, you can able to convince the court based on the electronic, medical and scientific case. A person having a muscle power, a person having a money cannot easily escape from the clutches of law. So these are the evidence, because there is a data, 70% of the cases, victim is compromising the accused outside the court and coming hostile before the court. Remaining 30% of the cases, 20% of the cases, victim supporting, and remaining other witnesses are not supporting the case of the prosecution, some compromising the accused, they are turning hostile. Therefore, in that 20% of the cases, the electronic, medical and scientific technical evidence collected by the investigation officer, which is proved before the court, will corroborate the evidence of the victim. There is a chances of convicting the accused. And remaining 10% of the cases, and victim and other witnesses are supporting the case of the prosecution, there are possibility of convicting the accused, imposing sentence in accordance with law. Now the law, in last 7 years, if you look at, the conviction rate is increasing because the technical evidence, medical evidence and the FSL, the evidence given by the FSLs are playing very important role in proving the case of the prosecution. Therefore, I request all of you not only concentrate on oral evidence, please concentrate on these are the evidences which plays very, very important role. Now, another important aspect is the honorable judges are here. I wanted to bring to their notice that they are always trying to point out the defects in the investigation and defects in the prosecution, based on which they are trying towards the acquitting the accused. I request all the participants who are here, look at the Maniappan's case. The Honorable Supreme Court with highly stated, effectively stated that even though there is a highly defective investigation is pointed out by the defense, the Honorable Court should not acquit the accused. The courts are requested to evaluate the evidence which is available before the court, not to influence the defects. Even though the defense is proved that there is a highly defective investigation, it is proved on the face of it. Even then, the honorable judges, the honorable courts in the country are requested by the Honorable Supreme Court through the... Sir. Sir. I'm sorry, sir. No, I'm only I'm telling, sir. And with regard to, thanks. I'm only requesting, sir. So the guide, I'm only recollecting the judgment given by the Honorable Supreme Court, the findings of the Supreme Court. Therefore, no, I'm sorry. Then coming to the topic which has been assigned to us, that what is the role of the victim in the investigation. Not only the effective role of the investigation and the prosecution, it is the active role to be played by the victim in effective conducting the investigation and the prosecution. Whenever a victim or the complainant approaches to the police station,
they must disclose all the facts at the time of giving the complaint or the 161 statement. Delay in giving in reporting the matter or the delay in reporting the facts to the investigation officer, which creates a doubts in the minds of the court process of law. Therefore, it is a victim role plays very important role to placing all the evidence at the time of filing the complaint, at the time of recording the 161 statement, or at the time of recording the 164 statement. So therefore, the role of the victim will place a very important role in cooperation with the prosecution as well as the investigation officer. There are also equally victim responsibility cast on them to cooperate with the investigation officer in recording the 161 statement, recording the 164 statement, and referring the medical examination whichever the case is required. Therefore, an effective support from the victim during the investigation, which plays a prompt investigation, which resulting into filing appropriate charge sheet before the court, which the accused committed. Now, the recommendations was by the group A was, when a victim or the complainant visits the police station, if the victim or the complainant is illiterate, they have to be taken care with all respect and protect all the interests of the illiterates, because illiterate may not know the consequences, a law which is governed by. Therefore, it is the duty of the station house officer who is in charge of that police station whenever he receives a complaint, is a burden on him to protect the interest of the illiterate who visited the police station. Now, the second recommendation which elaborately discussed and recommended by the group A was that if a deaf and dumb, a witness or the complainant visit the station, the investigation officer, to ensure there should be a translator to be present at the time of visiting the deaf and dumb, so that through translator a complaint may be reduced in writing, 161 reduced in writing. It also further recommended that there should be a video audio recording at the time of recording the 161 statement of the translator, and the safety of the victim also. Yes. So third one is this, protect the safety of the victim. Fourth one is, and to see the investigation officer duty is to ensure the extra factors, means a victim gives a complaint before the police station, a person having an influence try to influence the victim, they see that it is the duty of the investigation officer to protect the interest of the victim in exterior factors where the accused is trying to influence the victim to reconcile the statement given in the complaint on the 164. These are the recommendations were made by the group A for what is the role of the victim in the investigation. Thank you so much, sir, for giving this opportunities. चलो मैं देखता हूँ. हाँ हाँ पीपीटी हो गई. Good afternoon to all learned gentlemen and learned judges, learned ladies. Thanks to Prakash ji, CAPT. Thanks to DOP Delhi. Thanks to both chief prosecutors who are with us, and one of them is our would-be director. Recently, he will join. Very soon, he will join the Directorate of Prosecution as a director. And thanks to all the participants of the Group C, who gave a beautiful discussion on the. No, this is not over. Thanks. आप तो वो बात कर रहे हो कि A to Z अंग्रेजी आती है क्या? A to Z अंग्रेजी आती है क्या? A to Z कब भाई A to Z क्या होता है? कि यार अंग्रेजी का A से Z के बीच में कोई छूट रहा तो मुझे बता दे. कोई छूट रहा है A to Z के बीच में तो मुझे बता दे. तो वही बात है कि सर तो A to Z तो आती है, लेकिन हमें यह डिस्कशन के बाद में सबको बटर चाहिए. जो कृष्ण भगवान को प्यारा होता है ना मक्खन, और मक्खन बड़ी मुश्किल से मिलता है. डिस्कशन के बाद में जो मक्खन तैयार कर रखा है वो हमारे पास में है, वो हम देना चाह रहे हैं आपको. हाँ जी,
जी सर, जी सर। तो आई वुड लाइक टू बोरो सम वर्ड्स ऑफ द जस्टिस पी.एन. भगवती. The equality is a dynamic concept. It cannot be cribbed, cabined and confined in the certain doctrinal limit. Similar way, I would like to find the definition of the word victim. The victim is a dynamic concept. It cannot be cribbed, cabined and confined in certain doctrinal limit of a individual person. It is the society at large. हमारे सामने जब विक्टिम खड़ा होता है डॉग के वहां पे जो डॉग विटनेस बॉक्स के अंदर, तो विक्टिम सिर्फ वही नहीं होता जो सीट पे बैठे जज साहब, वो भी विक्टिम हो सकते हैं, बाहर निकलते हैं वो भी विक्टिम होते हैं, प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है उसकी उतनी जिम्मेदारी, जो डिफेंस का लॉयर भी अगर खड़ा होता है तो वो भी विक्टिम हो सकता है, पुलिस वाला खड़ा है वो भी विक्टिम हो सकता है, और दूसरे स्टेक होल्डर कोई भी खड़ा हो सकता है वो भी विक्टिम हो सकता है। तो विक्टिम कोई भी हो सकता है, इसलिए विक्टिम की जो डेफिनेशन है वो इलोबरेट करिए, वो उसको बहुत इलोबरेट वे में आप समझें और इलोबरेट वे में ही उसके ऊपर काम करें। आइदर जुडिशरी हो, आइदर चाहे प्रोसिक्यूशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और स्टेक होल्डर, चाहे फोरेंसिक वाले हो। फोरेंसिक वाले ये सोचते होंगे कि भाई हमने तो 4 कागज लिख दिए भेज दिए, हमें क्या करना है। भाई आप भी तो आ सकते हो कल को नंबर में, बाहर निकलते अपराधी आपको ये थोड़े पूछेगा कि आप तो फोरेंसिक वाले छोड़ते हैं, वो तो पुलिस वाले के सिर्फ यूनिफॉर्म में होता है, उसके साथ भी ऑफेंस कमिट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है हमें उस कोर्ट का भी ध्यान रखना चाहिए जो मार्टिन लूथर ने कहा कि इनजस्टिस इज एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो जो भी है आप करेक्ट कर दो। थैंक यू सर उसके लिए। पीपीटी में चलते हैं सर। विक्टिम की डिफिनेशन है वो सबने डिस्कस कर रखी है, हो गया सर, सबके साथ में डिस्कशन हो गई, इसलिए मैं दोबारा उस पर रिपीट करूंगा नहीं, फिर A to Z वाली बात आ जाएगी। आप रिकमेंडेशन पे जाइए सर सीधे। हाँ, तो रिकमेंडेशन की भी मेरे ख्याल में कल डिस्कशन हो गया, तो वो भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तो विक्टिम हो जाएंगे सर हम लोग। तो अब आगे चलते हैं सर कि मतलब होता क्या है कि प्रैक्टिकल, इन्होंने नीलकमल जी ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, लीगल एकेडमिक जो लीगल लिटरेचर है उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो विक्टिम का रोल है वो डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है उसमें हम आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ा एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का। फॉल्स रिपोर्टिंग बहुत होती है, विक्टिम को वो अवॉइड करना चाहिए फॉल्स रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स की। सेकंड होती है कि उसका जो वर्जन है वो एग्जरेटेड वर्जन नहीं होना चाहिए। अब वो वही वाली बात है जो तलवार का जिक्र हो रहा था, फिर वो है जो पिस्टल ले आते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। वो भी ये भी नहीं बता देने को होता है एक इंसिडेंट करने वाला है, 4 का नाम और ले लेती है, फिर गड़बड़ हो जाता है हमारा केस। तो विक्टिम को एग्जरेटेड वर्जन से भी बचना चाहिए। फिर विक्टिम को एक्यूज को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, केस प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सर्कमस्टांसेज और अदर रिलेवेंट फैक्ट है जो इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंडेटरी और रिक्वायर्ड है, उन सब चीजों को विक्टिम पॉइंट आउट करे, तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। अदरवाइज ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ कर पाएगा, ना प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कुछ कर पाएगा, और ना जज कर पाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि बेंथम ने कहा है कि जो विटनेस होता है वही हमारा आई एंड एयर होता है, आंख और कान होते हैं। तो उसी लाइन के अंदर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद के अंदर आता है कि विक्टिम के जो राइट है वो इन्होंने अभी डिस्कस कर लिया कि विक्टिम के क्या क्या राइट है, बड़े डिटेल से डिस्कस के लिए। प्री एफआईआर केस रजिस्ट्रेशन का राइट होता है वो जानने की उसमें क्या रजिस्टर करवाया है। अगर उसे यही पता नहीं कि क्या रजिस्टर करवाया तो फिर यूजलेस है वो। फिर उसके बाद में मेडिकल एड विक्टिम को मिले, होता क्या, होती ग्रीवियस इंजरी है, डॉक्टर साहब पुलिस वाले कहने पर सिंपल लिख देते, हो गया काम। 325 की 323 हो गई, मौज महाराज, कुछ नहीं होने वाला जी अब। फिर उसके बाद के अंदर है जो आगे चलते हैं, कॉपी ऑफ एफआईआर वो ले, पोस्ट एफआईआर के बाद में केस का स्टेटस वो जाने। इन्वेस्टिगेशन में अगर केस का स्टेटस अगर विक्टिम को नहीं मिलेगा तो फिर वो उसका केस का पता ही नहीं चलेगा उसे, कब प्रोटेस्ट, कब उसने क्लोजर फाइल हो गया, कब उसमें आगे प्रोसीड कर गया, कब क्या हुआ, फिर उसे नोटिस आता जी मेरे पास तो नोटिस आया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ होना नहीं होता उसका, तो वो विक्टिम को जानना बहुत जरूरी है। विक्टिम को बेल की प्रोसीडिंग अटेंड करेगा तो वो अपना वर्जन बता पाएगा प्रोसिक्यूटर को वर्जन बता पाएगा, तो उसकी बात प्रॉपर कोर्ट के सामने आएगी, क्योंकि कोर्ट वेटेज देता है कि इंपार्शियल अथॉरिटी होती है प्रोसिक्यूटर उसको और उसकी बात को, तो वो फैक्चुअली चलता है। फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस वो जाने की क्या क्या कलेक्ट हुआ क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद में कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो जरूर जाने, क्योंकि हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग सीआरपीसी है उसमें एक प्रोविजन है, इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड टू इंफॉर्मेंट, 173 के अंदर ही है
लेकिन अभी तक उसका मोड है वो बहुत सारे स्टेट ने जो है डिटरमाइन नहीं किया है। रिसेंटली अब दिल्ली हाईकोर्ट की भी एक डिसीजन आई थी और एमपी में शायद मेरे ख्याल में बता रहे हैं कि मोड डिटरमाइन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पी गोपाल कृष्णन वाला जो एक्टर दिलीप वाला जो मैटर था उसमें इंफॉर्मेशन वर्ड को बड़े इलोबरेटली डिस्कस किया, तो उसकी डिफिनेशन के हिसाब से वहां सप्लाई होनी चाहिए कॉपी उसको विक्टिम को। फिर नए वाले में तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं साहब। फिर उसके बाद में विक्टिम को कोऑपरेट करना चाहिए पुलिस को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जिससे सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो और सारी चीज उसको बतानी चाहिए। कभी कभी विक्टिम क्या होता है कि आगे पीछे की चीजें छोड़ देता है और ऐसी ऐसी चीज बताता है कि जिससे केस दर्द हो जाए, बस आगे पीछे कुछ ना हो। फिर पता चलता है कि क्रॉस में आता सारा का सारा कि इसके तो 10 लिटिगेशन पहले भी है, 4 लिटिगेशन में ये कंप्लेनेंट है, 5 में ये एक्यूज्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा केस डिमोलिश होने के पूरे चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद के अंदर अगर रिहेबिलिटेशन की जरूरत है तो वो पीपी को बताएगा या जो एजेंसी है उसको बताएगा, तब होगा। कंपनसेशन वाला भी हमने डिस्कस कर लिया, वो बताने पे ही होगा। फिर उसके बाद उल्टा चल रहा है क्या आपका ये? अगर इफ रिक्वायर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो बताए जरूर, बिना प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट को बताए कुछ नहीं होगा। फिर है तो फिर वो जाके वहां अपनी वो मैं करवाता भी हूं, मैं खुद भी करवाता हूं कि भाई ऐसी सिचुएशन में आप एक 100 नंबर पे कॉल करो। फिर उसके बाद में एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवा के जो विक्टिम का विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है उसके अंदर भिजवाते हैं। फिर उसके बाद के अंदर उसको अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे यहाँ बिल्कुल डिस्कस नहीं होती है वो है सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से 90% केसेज वो अनरिपोर्टेड होते हैं। तो भाई कौन पचड़े में पड़ेगा, मतलब कोर्ट जाने का मतलब है कि तूने कुछ गड़बड़ कर रखा है। बेशक मैं एज ए विटनेस जा रहा हूं तो तूने कुछ गड़बड़ कर रखा है। एक बार मैं गवाही करवा रहा था तो एक विटनेस मुझे कह रहा है, मैंने कहा भाई आपको ना ठीक से गवाही देनी है। करे जी मैंने तो कोई पिछले जन्म में पाप कर रखे हैं जो आज मुझे कोर्ट का मुंह देखना पड़ रहा है। मैंने कहा भाई तेरे से ज्यादा तो हमने कर रखे हैं जो रोज आ रहे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर मेंटल ट्रॉमा और स्टिग्मा के लिए काउंसलिंग बड़ी जरूरी है और इसके ऊपर इलोबरेटली हमें वर्क करने की जरूरत है कि काउंसलिंग उसको ड्यूरिंग ट्रायल भी उसको काउंसलिंग मिलती रहे, क्योंकि वो एक विक्टिम जिस दौर से गुजरता है वो हमारे लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है विक्टिम के लिए कि वो उस मेंटल डिस्ट्रेस से या डिप्रेशन से वो दूर हो। मेडिकल एड की रिक्वायर होती है, कभी कभी एसिड अटैक की केसेस के अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। लंबे टाइम बाद में पता चलता है कि आंख के अंदर पूरी आंख ही डैमेज हो रखी है। तो ऐसी सिचुएशन अगर वो बताए इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही तो उसके लिए काम हो सकता है। फिर उसके बाद में विक्टिम को यह जानकारी होनी जरूरी है कि अगर थानेदार जी तो 2 स्टार वाले, 1 स्टार वाले या 3 स्टार वाले अगर उसकी बात नहीं सुन रहे तो अशोक स्तंभ वालों के पास में पहुंचना है। और अशोक स्तंभ वाले मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि यू शुड गो हायर अथॉरिटीज एसीपी डीसीपी टू अप्रोच देम एंड टोल देम कि आपने क्या एविडेंसेस कलेक्ट करे क्या नहीं करे हैं, वो उनको बताओ। फोन नहीं लेते। मैडम बता रही थी कि फोन नहीं लिया जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग थी, आयो ने लिया ही नहीं, इन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया फोन को, फिर फोन सीज होता है, फिर एफएसएल जाता है, तो मैटर डिले होता है हमारा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एविडेंस के रूप में कोई आर्टिकल कोई डॉक्यूमेंट अगर कंप्लेंट विक्टिम के पास में हो और विक्टिम वो टाइमली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे और देने के बाद में उसकी इन्वेंट्री की रिसीविंग जो है वो जरूर ले ले, तो उसका वर्जन में ट्रूथफुल रहेगी। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि अभी रिसेंटली इन 1 मिनट सर। जी सर कंप्लीट करूंगा 1 मिनट में। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन कैन नॉट प्रूव द फैक्ट्स विच डिड नॉट डिस्क्लोज बिफोर द पुलिस। अरे पुलिस तो अपनी मर्जी से 161 लिखती है, प्रोसिक्यूशन कहां से लाएगा? विक्टिम बताएगा तो भी तो पता चलेगा ना उसको अलग से। फिर उसके बाद के अंदर है ना, विक्टिम को एक बात और बतानी हमें बहुत जरूरी होती है, वो होता है कि विक्टिम शुड हैव पेशेंस। विक्टिम में क्या होता है कि वो एक बड़े अच्छा डिस्कस करे थे, गुलाटी जी बता रहे थे कि टीचर आता है कि जी मुझे तो मैंने बता दिया कोर्ट को, अब मुझे आज ही नहीं आए तो जुडिशियल प्रोसेस उसको समझानी पड़ेगी कि भाई देख इसमें इस तरीके से है जो टाइम लगेगा और फिर उसके बाद में तुझे न्याय मिलेगा। और उसको विक्टिम को यह भी जरूरी जानना है कि उसे डिपोजिशन कैसे करनी है कोर्ट में, किस तरह से अपनी बात कहनी है कि वो सारी बात रिकॉर्ड पे आ जाए, क्योंकि कोर्ट जो फाइनली जो जज साहब डिटरमाइन जो जजमेंट देंगे वो जजमेंट उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर देंगे जो रिकॉर्ड के ऊपर आ रखे हैं। फिर उसके बाद में मैं लास्टली कहूंगा कि विक्टिम इज द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑल प्रोसीडिंग
victim cannot be confined into concept of particular individual, but it includes society and public at large with the sufferer. A closed mouth catches no fly. इसीलिए विक्टिम को बोलना बहुत जरूरी है. विक्टिम बताएगा तभी सारा काम होगा. धन्यवाद. थैंक यू सर. आप बताइए क्या डिफिकल्टी आपको है? सर वो पहले से ही बोल के आया, मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा. वो पहले से बोल के आ रहे हैं कि हम सिर्फ 1 मिनट बोलेंगे. चलो. Respected members of the faculty, honorable judges, learned public prosecutors, my seniors from the police department and public forensic science department. I am Inspector Neeraj Sarna from Chandigarh Police. Today I have been assigned the topic to speak on role of victim in investigation. First of all, since the last 2 days we have been discussing a lot on the victim, definition of victim. And we are much focusing on victims of sexual assault or POXO cases. But for me, every individual coming to the police station is a victim. And everybody who is arrested in some case, his family or his near and dear ones, they also become victims. For me, I think this is the definition of a victim. But as we are discussing this, especially on this crime against women and children, so as sir told me, the difficulty first of all is like there is not exact reporting. Second, isko kaise? Details of incidents to be shared by the victim in truth. In many cases, victims are brought to the police stations. Victims are brought to the police station after they are being tutored by something. There are some vested interests in getting registered some FIRs against some persons, particularly in some property disputes and other disputes. And nowadays it has become a trend to get FIRs registered under sexual offences. So females or victims are being used as a tools. So this is the responsibility of any of the victim. If she is coming to the police station, she should tell the truth in depth. A true picture of the incident should be presented before the police officer, so that he can take the action accordingly and as per law. Second, the lacunas. The lacunas in the statement of victim. Now, as per the new laws, the statement of the victim has to be video and audio recorded. So it will be quite a task for us, because whenever a victim comes to the police station for the first time and she is like in conversation with a police officer, he or she lacks confidence. He may miss some certain points which we cannot later on alter in the audio video recording system. So for this, we have to win the confidence of the victim first, give her time, give her proper time, proper hearing, a patient hearing, so that he or she can recollect all the incident which happened with him or her. Then preparing of site plan and taking the victim to the spot. It is again a nightmare for the victim to explain all the things to the investigating officer when he or she reaches the spot. Where exactly what happened. Here, the police officer, especially the lady officer, should play an important role if the victim is a lady. She should be like, her confidence should be won over. She should be able to come out of that trauma so that she can exactly. Now the site plan has also to be videographed. As per the news laws, the site plan has also to be videographed and the things are supposed to be there where they were supposed to be. We cannot place anything as per the statement of the victim or as per our choice. Like we used to do it earlier. Like we can place some things like there, okay, get it photographed from here. It has to be 360 degrees now. So the next करेंगे. 2 points रह गए sir. I'm very thankful to you. Yes. यहाँ तक कि किसके आगे भी है. After completing the investigation and preparing of the charge sheet, an investigating officer must make the victim understand
what all the papers are being submitted along the charge sheet, whether it is the site plans, whether they are the Caesar memos, or all the statements, all the witnesses, what they have said in her favor or against her, what is the evidence on record on the case file. Active participation of the victim in all the bail hearings of the accused. She should know at every step what is being done in her case. Whenever their accused files a bail application, she should have the right to come appear in the court, and if need arises, she could make her point before the honorable judge. Statement of the witnesses must be in the language which he or she understands. Normally, in some cases, as my group member Nihar has stated, there is a language barrier. Like in city like Chandigarh, mostly we are working in Hindi, Punjabi and English. But some of the people in Chandigarh also, they are hard of understanding even in these three languages. Especially those who are residing in slum areas, they have come from far off places in search of work. And mostly those people are victims of these kind of crimes. So it is the duty of the investigating officer to make the victim understand whichever language she is comfortable. The most important role of the victim, in my opinion, is she should bring in the notice of the police any evidence, digital or physical, or any witness, whether it has been left out during the investigation or not. This is the most important point, that if by in any chance a police officer, the investigating officer forgets or he misses something, like during the investigation he misses a point, he misses some evidence, important evidence, it is the duty of the victim to bring it to the notice of the investigating officer. That's all on my part. I'm thankful to my group members and especially Bhisham sir for helping us in putting this into the PPTs. A big thanks to you, sir, and thank you all. And if my points are shortcoming in somewhere, I'm sorry for that. Thank you. थैंक यू सो मच सर। अब मैं निवेदन करूंगा भटकरिया सर से, प्लीज स्टेज पे आए और हमारे स्पीकर्स को मोमेंटो प्रदान करें। तालियां जोरदार होनी चाहिए। इनिशिएटिव लेने वाले की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया, स्पीकर बने और अपने ग्रुप के व्यूज रखे सबके सामने। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच सर। अब मैं थोड़ा आप लोगों से जानकारी चाहूँगा सर, आप लोगों में से कितने अधिकारी ऐसे हैं, चाहे कोर्स से हो या कॉन्फ्रेंस से, जिनका ट्रेन या फ्लाइट या जो भी रिटर्न का प्लान है वो 10 बजे से पहले का है? अरे बहुत लोग ना, आज रात, कल रात नहीं, आज रात 10 बजे से पहले का है, 10 o'clock इन द नाइट। तो सर काइंडली, अच्छा कोर्स वाले डाउन करें सर, सिर्फ कॉन्फ्रेंस वाले बताएं, ओनली कॉन्फ्रेंस। सर आप लोगों से निवेदन है कि ग्रुप में, आप तो सर एमपी के, आप तो हाथ बगल में जाना है सर, कहाँ जाना है? बगल में मैं ये बोल रहा हूँ, आउट ऑफ एमपी वाले अधिकारी और कॉन्फ्रेंस वाले, हमारी कुछ प्रायोरिटी सर, कुछ इशू है, इसलिए मैं इश्यूज है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर आप लोगों से निवेदन है कि जिनका भी जो मध्य प्रदेश से बाहर के अधिकारी, मध्य प्रदेश वाले तो हमारे बीच के, हम कभी भी उनको पकड़ लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, जिनका 10 बजे से पहले कोई रिटर्न प्लान है, तो काइंडली अपना नाम, डेजिग्नेशन और स्टेट, ये 3 चीजें सर उसमें मेंशन कर दें ग्रुप में सर। थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे 4th टॉपिक के स्पीकर्स प्लीज स्टेज पे आ जाएं। टॉपिक 4, मैं निवेदन करूंगा अमित शर्मा सर से शुरू करें, ताकि
फर्स्ट ग्रुप का हमको मिल सके, विक्टिम जस्टिस एंड एस्पायरेशन फॉर प्रोग्रेस इन सोसाइटी। सर नहीं, स्लाइड चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही स्लाइड। अच्छा, आप पेपर से करें? हाँ, नहीं पेपर से भी नहीं करूँगा। अच्छा, एक्सटेंड कर। सबसे पहले नमस्कार। कल जनगण मन में हैव योर अटेंशन। कल जनगण मन से शुरुआत की थी, मुझे पहले 3 वर्ड्स याद रहे, थोड़ा मैं भूल रहा हूं, आप मेरी हेल्प कर सकते हो? जन गण मन मेरा टॉपिक, पहले 3 वर्ड्स, लेटर ऑन के कुछ वर्ड्स, और लास्ट में क्या बोलते हैं, जय हो है, जय हो, इन पे ही है। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया से ही मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है और नेशनल एंथम पे ही खत्म होता है, क्योंकि पूरा समाज की इथोस, एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। हम विक्टिम के लिए, विक्टिम जस्टिस के लिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए कुछ और नया नहीं कर रहे हैं। जो निहित है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जिसको अभी हमने अपनी लिमिटेशन और चैलेंजेस बना लिया है, जो हमारी ओथ है, हमें सिर्फ उसको फुलफिल करना है, बिकॉज परफॉर्मिंग माई ड्यूटी इज परफॉर्मिंग societal duty, and societal duty is victims justice and rights। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत सहज, बहुत सिंपल बात करता हूं। हम सभी पढ़े हुए इंग्लिश में, A for एप्पल, इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, समाज भी इससे बाहर नहीं निकल रहा है। विक्टिम, भाई तुमने ही कुछ गलत किया होगा, विक्टिम तुम क्यों गए उस समय, तुम क्यों गए, ये समाज नहीं बदल रहा है, सोच नहीं बदल रही है, इस सोच को बदलना है। आप टॉर्च बियरर्स हैं, आप एम्बेसडर्स हैं, आप इनलाइटेंड हैं, आप एम्पावर्ड हैं। मैं तो कहूं समाज में समाज ने आप में इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है कि सिर्फ आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दें, शायद जिसके लिए पेड भी हैं, तो वर्थ, हम बेसिक फंडामेंटल्स भूल रहे हैं। विक्टिम विक्टिम विक्टिम, अरे डिप्रेसिंग वर्ड है, नेगेटिव सेंस करता है। एस्पिरेशंस, प्रोग्रेसिव, ऐसे वर्ड्स, जस्टिस, ऐसे वर्ड्स के साथ विक्टिम नेगेटिव साउंड हो रहा है। It should be, victim should be a survivor, fighter, positive words. Why negative? Why negativity? Victimization. 3-stage process, a 3-stage process. At every stage, at every phase, in and out victimization है। Accused ने किया primary, laws, इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं सेकेंडरी, टर्शियरी, जो हम फाइनल समाज कर रहा है। समाज किसी से नहीं बन रहा है, समाज मेरे से, आपसे, मेरे आपके इंटरेक्शन से बन रहा है। क्यों नहीं हम एक जेंटल अप्रोच रखते, क्यों नहीं हम पॉजिटिव अप्रोच रखते? क्या ये अप्रोच इतनी मुश्किल है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं? क्या ये ऐसी चीजें नहीं है कि जैसे स्वच्छता अभियान चलाना पड़ रहा है? और वेरी बेसिक, एज माई फ्रेंड हैज राइटली पॉइंटेड आउट कि 1 मिनट है, बोलने के लिए बहुत था, बहुत मटेरियल रखा है। मैंने जैसे स्टार्ट किया था जन गण मन, मैंने अपना स्टार्ट में अपने ग्रुप बी को रखा है। सबसे बड़ा राइट है रिकॉग्निशन का, सेंसिटाइजेशन का। आप हीरो वर्शिप में फंसे हुए हैं, मैं और हम, मैंने ग्रुप बी चूज किया है कि इट इज ग्रुप बी। जब तक हम कलेक्टिव एफर्ट नहीं करते, जब तक हम कलेक्शंस नहीं, अपने आप को एक यूनिटी स्ट्रेंथ,
बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अरे विक्टिम को वनरेबल बनाई इसलिए रहे हो क्योंकि उसको अकेला छोड़ रहे हो, आइसोलेशन में छोड़ रहे हो, उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, उसको सिंपैथी एम्पैथी पता नहीं कितने मुश्किल वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, उसमें उलझा रहे हो। क्यों? सेहत से क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि भाई तू सर्वाइवर है, तू फाइटर है, हम तेरे साथ हैं। ये विश्वास, ये साथ ही तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की डेफिनेशन है। बड़ा वर्ड इस्तेमाल किया, प्रोग्रेसिव। वर्ड से नहीं आएगा, सोच से आएगा। A nation is not great because it's great, its citizens makes it great. कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज के बाद भी और उसके बाद भी, लॉज आते जाएंगे जाते रहेंगे। इट इज द मैन who implements, who manage। सर ने बड़ा गुराया, सर ने बड़ी अच्छी बात कही, कितने मर्जी लॉज बना लो, सुपरफ्लुअस इफेक्ट है, कुछ नहीं है। समाज, सोसाइटी मेरे और आपसे बनेगी अगर जे मैं आज सेंसिटिव हूं, मन कर्म वचन, सुपरफ्लुअस नहीं, हाथ दिखाने के लिए मैं पब्लिक फोरम में कुछ भी बोल दूं, बड़ा इफेक्ट करता है मुझे भी और आपको भी बड़ा। बट मन कर्म वचन, क्या मेरी अप्रोच भी उतनी जेंटल है? विक्टिम, सर ने बड़ी रेलेवेंट बात कही, उनके लिए अक्यूज भी विक्टिम है। हमारे यहां जो रियल अक्यूज है वो तो नेट में आता ही नहीं है, आता है डाउन ट्रोडन, लास्ट ऑफ द लीस्ट। ऐसे मरे हुए क्या, तो मरे हुए मारने से कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से सर नहीं, अथॉरिटी बोल नहीं रही है, मैन ऑफ लॉ। जब तक चलो एक मिनट सर, बस मैं आपसे एक ही प्रॉमिस चाहता हूं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि जन गण मन, शुरू की मुझे बातें याद आ गई, अब लास्ट के फ्यू वर्ड्स मुझे और बता दीजिए। जय विजय, इट इज विनिंग वन सेल्फ, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक समाज विक्टिम को मन से नहीं जिताएगा तब तक विक्टिम हारता ही जाएगा। नमस्कार। गुड आफ्टरनून ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हमारा जो इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है अब, लेकिन हमारा यही है कि जो विक्टिम है उसको सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम कैसे दिलाया जाए। उसकी अगर कोई गलती नहीं है, फिर भी जो आजकल माहौल उसका चल रहा है, जो इसमें इसका पोजीशन चल रही है, उसको लग रहा है कि उसी की गलती है। उसका सोसाइटी उस हिसाब से ट्रीट कर रही है कि उसको लग रहा है कि मेरी ही गलती है। इंस्टेड एक्यूज्ड को लग रहा है कि उसने अच्छा किया है, उसने ठीक किया है, उसकी उतनी गलती नहीं है जितनी विक्टिम की गलती है। तो हम ये चाहते हैं कि उसको विक्टिम को हर स्टेप पे, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, फिर प्रोसिक्यूशन हो और फिर ट्रायल हो, तीनों जगहों पे उसको जस्टिस मिले, उसको फील महसूस हो कि मेरे साथ लोग हैं, ये मेरे लिए हैं, ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए लड़ रहे हैं, और मुझसे अगर किसी ने ज्यादती की है ये उनके खिलाफ है, हम सब उसके खिलाफ हैं और इसके साथ हैं। ये हमारा एक अप्रोच होना चाहिए, तब जाके ये सोसाइटी है, ये प्रोग्रेस सोसाइटी कहलाई जाएगी अगेंस्ट विक्टिम। अदरवाइज विक्टिम इस वक्त उसने अपना जो भी है लूज किया हुआ है कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी, आइदर इन प्रोसिक्यूशन और इन इन्वेस्टिगेशन, इन सोसाइटी आल्सो, वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिल रही है सोसाइटी से। तो इसके लिए हमने जो डिस्कशन जो हमारी हुई है जो अपने ग्रुप में, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि क्या क्या होना चाहिए ताकि एक विक्टिम को कॉन्फिडेंस मिले, उसको जस्टिस भी मिले और कॉन्फिडेंस भी मिले कि नहीं उसने कोई जाति नहीं की, उसने कोई गलती नहीं की। उसमें पहला है कि विक्टिम शुड गेट जस्टिस एट एवरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल, एंड इट विल इफेक्ट द society, progress of the society. Even the victim of the crime has to be accepted in the society wholeheartedly.
उसको एक्सेप्ट करना है। जिस तरह अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का है एक विक्टिम, उसको अपने घर वाले, रिश्तेदार, हमसाए, उनको इस तरह से ट्रीट करना है कि उसकी कोई गलती नहीं है और इनस्टेड एक्यूज्ड के खिलाफ रहना है कि उसने गलती की है। Victim should be treated with compassion and respect for his or her dignity. Victim should not feel that he or she has committed any wrong, but victim should should see that the offender is punished before him. It should be it should be an offense if the victim is at any stage, at any time humiliated for that offense which has been committed upon him or her, and it should be an offense if anybody humiliates him or her. कि अगर कोई भी उसको ताना दे, हमसायगी में, रिश्तेदार में, कोई भी उसके एक्यूज्ड के साइड में, ये ऑफेंस होना चाहिए और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए। लॉ ऐसे आया है रिसेंटली भी, अब जो ये लॉ शुड बी विक्टिम फ्रेंडली, और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ये विक्टिम फ्रेंडली बनाया गया है, मगर इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड होल हार्टेडली इन लेटर एंड स्पिरिट। दूसरा है कि विक्टिम शुड बी रिहेबिलिटेटेड। It is the duty, it should be the duty of the concerned government or agencies that the victim should be rehabilitated. And one more point is that awareness regarding the society, regarding the this जो society उसके हक में कर रही है काम, victim के हाथ में, ये awareness होनी चाहिए, ये awareness करना चाहिए। कितना दिन हो गया सर? And protection should be given to the witness, to the victim, till the victim gets established, or at least till the trial is over, till the case is over. ये हमने कुछ चीजें रखी हैं जो हमने ये कहा है कि ये विक्टिम के लिए सोसाइटी की तरफ से आना चाहिए, ताकि उसको कॉन्फिडेंस मिले कि सोसाइटी और जो भी कोई उसके लिए लड़ रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, वो उसके साथ है। ये विक्टिम का ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसका कॉन्फिडेंस सोसाइटी पे हो और सोसाइटी को कॉन्फिडेंस जीत लेना विक्टिम का, ये बहुत जरूरी है। और ये ही है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी तभी बन जाती है एक विक्टिम के लिए, तब उसको इंसाफ मिलेगा अगर ये चीजें उसके साथ हों। थैंक यू वेरी मच। मैं ग्रुप सी सर, आपका जी। मैं लगा रहा हूँ सर, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा ठीक। Good afternoon, everyone. The restlessness and fatigue on your beautiful faces command me to proceed at a lightning pace, and so shall I. Yeah. The irony so far had been that the very person for whom the entire machinery of criminal justice system stood actuated was given a back seat, from where his anguished cries were reduced to nearly inaudible whispers. This first welcome step, therefore, is the acknowledgement of this disquieting flaw in our system. With this realization begins the process of bringing the victim from the end of the queue to the fourth. Essentially, the process of justice dispensation system can be segregated into three stages: pre-trial, trial, post-trial. Pre-trial essentially relates with the investigating agency and the prosecution to an extent. First of all, the IO is expected to play a proactive role and is not to be expected as a dispassionate spectator. Then he must inform the periodical progress of the investigation to the victim. The IO has to ensure that all evidence and the witnesses so offered by the victim, if relevant and admissible, are taken into consideration. The immediate legal assistance, if required, must be provided to the victim in coordination with the PLVs so appointed by of the victim should be carried out, and for that witness protection committees, they come very handy. Effective representation of the victim must be ensured at the time of hearing in bail applications, whether at the time of trial or before the commencement of the trial.
Then when it comes to trial, the judge should provide opportunity to the victim of being heard at the time of bail application as well as also at the time of framing of charge as far as possible. Compassionate approach should be adopted towards the victim. Witness protection during a recording of evidence must be ensured. Opportunity of being heard at the time of arguments, at the time of culmination of trial and sentencing should be also accorded to the victim. At the time of sentencing, appropriate consideration to rehabilitation, to compensation, recompense the victim under section 357 and 357A of CRPC should be also provided. As far as the post-trial procedure is concerned, it must be ensured that the sentence so imposed is not reduced to a paper order and it should be appropriately executed. Then the compensation which has been awarded must be realized as well. Then it should be further assured that the victim is re-assimilated and rehabilitated in the society. Thank you so much. My esteemed colleagues, I'll just take half a minute of yours. Basically, most of it has already been sent. So what I'd like to conclude with is I concur with all of them. Thank you. Amit, you can continue. Book दे दो सर, book दे दो book. मैम आप आ जाओ, book दे दो. May I request the dignitaries, see, really the knowledge, wisdom and enlightenment do reflect. The professors, I am very lucky. Sir, मैं कर रहा हूँ सर. आदि बुक. सर मैं एक बात कह रहा हूँ कि मेरे ना बहुत एक प्रिविलेज है, एक लक है कि मैं प्रोफेसर साहब के साथ बैठा और उससे बड़ी एक एनलाइटनमेंट महसूस होती है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए क्योंकि साथ से ही, संगति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है. नेवर एंडिंग. आपने वैलिडिक्ट एड्रेस भी अभी कर दिया. थैंक यू सो मच सर. अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा भटकरिया सर को ही कि हमारे जो स्पीकर्स हैं उनको मेमेंटो दे करके सम्मानित करें. तालियां बजाएं सभी. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. क्या बात है, इसके लिए भी तालियां हो जाए. बहुत बढ़िया. अब मैं लास्ट टॉपिक के 4 स्पीकर्स को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हाई टी वेट कर रही है हम लोगों का, तो जितना जल्दी आप कंक्लूड करेंगे हमारा समरी आ जाए, उसमें बस प्रेजेंटेशन हम शेयर कर देंगे. आइए प्लीज. ना चाय बाद में सर, लास्ट में आपके प्रेजेंटेशन के बाद. हाँ बिल्कुल. हम शुरू करेंगे ग्रुप बी से. ग्रुप बी सबसे फास्ट है जी. सर आइए सर, शुरुआत आप ही से होगी. या ब्रेवो बी. सर का नाम डिस्प्ले हो रहा है. First of all the respected members of my faculty and the man who is doing this and that, I may say,
And please have a big hand for him, Mr. Prakash, Thank you. who is the man behind the scene. He is the person who is doing all this, and thanks to him. Before having my words, I also endorse the views by my colleague Mr. Upadhyay and Mr. Nikhar, and views for the prosecution are that I endorse that. But before speaking for my topic, I was just thinking that I am in a very, very beautiful department, that is a prosecution. But somehow practicality is not there. गालिब दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है नहीं. And now we are entering into the new era. Thanks to the CAPT, there was a presentation of our Honorable Home Minister and saying that the end of the colonial era and the new era starts. So from this dais, in this conference, I propose, and I just want, it's my request, there should be a resolution that this new era should be also for the prosecution. There are so many academies for the police, for the judiciary, but I think everybody is agree with me that there is no academy. Sir, CAPT is for prosecutors only. CAPT is for prosecutor. No, not at all. Yes, sir. Not at all. I differ and I mean to differ. सर ये आपकी अपनी एकेडमी है, आप अपना माने, हम तो आपको अपना मान रहे हैं. सुनो, ऐसे है. सुनिए, आपने कहा ये सारा भारत मेरा है, मैं भारतीय हूँ. ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का ये विचार था कि सर आपकी सारी की सारी इंसिग्निया देख लीजिए, वर्डिंग देख लीजिए. वर्ड कहां से शुरू होता है? सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग. उससे अगला वर्ड क्या है? प्लीज लिसन मी नाउ. उससे अगला वर्ड क्या है? पढ़िए. उससे नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उनके आगे मोटो क्या है? दी थिंक टैंक फॉर इंडियन पुलिस. प्रोसिक्यूशन is not part of police. So I propose a resolution should be there that a prosecution academy should be there. It is our request through you to the Honorable Home Minister, because we are starting it from here. Let us start a new era. And there was a word, IPC has gone, CRPC has gone, that is of colonial, and now BNS starts. Yes. Yes, agreeable. So if the BNS start, तो let me switch over from BBC to भारत. ऐसे है, आप जितनी बार मर्जी कहें कि हम आपके हैं. ये प्रोसिक्यूशन, ये जुडिशरी और ये पुलिस कोर्ट में तीनों अलग अलग हैं, और ये तीनों स्टेक होल्डर हैं. तीनों की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है. वो रिस्पेक्ट करिए, आप भी हम भी, तो सबसे अच्छा होगा. जो मुझे टॉपिक दिया गया था उसके बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो चैलेंजेस हैं, होता क्या है, स्टेट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि विक्टिम मेरा है, और केस कहां से स्टार्ट होता है? स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड. उसके बाद स्टेट भूल जाता है. मैं क्यों बता रहा हूं कि जैसे मेरे से पहले कहा गया था कि किसी कोर्ट कम्प्लेक्स में प्रोसिक्यूशन ब्लॉक नहीं होता, है ही नहीं है. कहीं हो तो मुझे पता नहीं. मेरे दोस्तों ने पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ऑफिस ही नहीं है. हम बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा टॉपिक चैलेंज है प्रकाश जी, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा. एक अदरवाइज एक कोर्ट की अच्छी बात होती है, काइंडली बियर विद मी, सो इट इज आल्सो फॉर यू. तो हम जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो ये है कि कोर्ट में विटनेस को, विक्टिम को ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ होना चाहिए? कोई स्पेसिफाइड रूम है? जो आप वल्नरेबल रूम की बात कर रहे हो, दैट इज फॉर द ऑनरेबल जज, दैट इज नॉट फॉर द विक्टिम, दैट इज नॉट फॉर द प्रोसिक्यूटर. सो इसी तरह के जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि स्टेट उसके बाद भूल जाता है. कहा तो यह जाता है कि स्टेट इज ओमनी प्रेजेंट, बट वेयर द स्टेट इज, इफ स्टेट इज देयर थ्रू द प्रोसिक्यूटर. अब पिटीशन जाती है तो क्या होता है? स्टेट थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंस में नहीं है.
फ्रॉम दिस डायस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये होना चाहिए, ये एकेडमी हो, ये उनकी भी कोई थिंक टैंक हो, उनको भी स्टेक होल्डर माना जाए। आपको हैरानी होगी, मैंने बहुत सारे हाई कोर्ट्स में भी उनके सर्च मार के देख ली, हाई कोर्ट की एक कमेटी होती है, बिल्डिंग कमेटी, कहां कहां बिल्डिंग बननी है, डीसी साहब मेंबर होंगे, पीडब्ल्यूडी वाले मेंबर होंगे, प्रोसिक्यूशन वाला मेंबर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट जज साहब मेंबर होंगे, प्रोसिक्यूशन वाला मेंबर नहीं होगा, इवन जेल वाले मेंबर होंगे, क्योंकि वहां लॉकअप बनाना है। पर ये क्यों भूल जाते हो कि जेल मैनुअल में भी लिखा गया है कि कैदी को इतनी जगह देनी है, जेल मैनुअल में भी लिखा गया कैदी को इतनी दाल, इतनी सब्जी, वो है ना सारा, पर ये कहीं नहीं अभी तक लिखा गया कि प्रोसिक्यूटर को कितना रूम देना है, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को क्या देना है, एडिशनल पीपी को क्या देना है, कोर्ट में कहाँ रूम देना, ये कहीं नहीं है। ये चैलेंजेस हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये वो चैलेंजेस हैं कि जिनके थ्रू हमने अपना काम करना है। नाउ कमिंग टू दी मेन पॉइंट्स, बिकॉज द टॉपिक जो था कि चैलेंजेस फॉर विक्टिम, उसके और लिमिटेशंस क्या हैं विक्टिम जस्टिस की, उस पर मैं ज्यादा ना बोल के, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। आइडिया क्या है, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हम सोचते हैं, अगर वो हम करने लग जाए ना, तो इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस का एक वो सबसे बड़ा आधार होगा। टॉपिक्स में है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि विक्टिम कौन है। कंप्लेनेंट कई बार विक्टिम नहीं होता, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए बहुत से ग्रे एरिया हैं, बहुत सा आपका आईक्यू मैच वहां तक करता नहीं करता, बहुत सी बातें हैं जो इस तरह हैं। और दूसरे चैलेंज है कि हम उस विक्टिम को कैसे कंफर्टेबल फील कराएं कि द होल एनवायरनमेंट इज फॉर यू, वी ऑल आर फॉर यू, वो उसको कंफर्टेबल कैसे करवाना है। और तीसरा जो चैलेंज है कि सोसाइटी उस विक्टिम को एक्सेप्ट कैसे करती है, उसके लिए हमने क्या करना है, ये बहुत बड़े चैलेंज है। मैं सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूं इस पे, क्योंकि दूसरी तरह भी कहते हैं कि ऑनरेबल जज साहब के सामने जब पीपी ने बोलना तो वो कहता बाकी सर आपको पता ही है। तो तीसरा है कि हाउ दी सोसाइटी रिएक्ट्स। एक तो है कि सोसाइटी विक्टिम को एक्सेप्ट कैसे करती है, एक ये है कि सोसाइटी विक्टिम पर जो हुआ उसके बारे में रिएक्ट कैसे करती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा उससे नेक्स्ट है कि हम विक्टिम के ऑर्डियल के बारे में सोसाइटी को एजुकेट कैसे करें, क्योंकि हम जितना सारा कुछ कर रहे हैं, अगर एजुकेशन हो, हम विक्टिम को इतने राइट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम कहीं एजुकेशन फ्री कर दें कि सबके लिए एजुकेशन फ्री है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हट जाएंगी। ये इस तरह से ये बातें करने वाली हैं। और अभी कल ही जो डायरेक्टर थी एमपी प्रोसिक्यूशन की, उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने 2 बार पहले कही, मैं फिर वो दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा मुझे विक्टिम से बहुत ज्यादा सहानुभूति थी, पर मुलजिम बहुत अमीर था, किसी तरह से वो जमानत ले गया। ये जो दर्द है ना उनकी, ये बीच वाली लाइन का, इस दर्द को समझने की जरूरत है कि जो उसका पैसा है अक्यूज्ड का, उसकी लाइजनिंग है, उसका स्टेटस है, वो कैसे इफेक्ट करता है, ये बड़ा चैलेंज है उसको करने के लिए। एक बात आई थी कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि विक्टिम को पैसा दिया जाए, कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम विक्टिम को उसकी कोई रीसेटलमेंट हो, कहीं दूसरी जगह जाके किसी और कॉलोनी में और शहर में जाके बस जाए, तो वो सोशल स्टिग्मा से, दूसरे सारा कुछ से बच सकती है, उसके बच्चों की एजुकेशन हो। ये उसको रीसेटल कैसे करना है, ये एक चैलेंज है। और इसमें जो स्पोर्ट पर्सन है, मैं उनका भी रोल जो है वो एक चैलेंज की तरह लेता हूं कि जब तक स्पोर्ट पर्सन उस विक्टिम को उतना सेंसिटाइज नहीं होगा, उस लेवल तक उसका आईक्यू मैच नहीं करेगा कि हाउ टू मेक एफर्ट्स टू टेक दैट विक्टिम आउट ऑफ दैट ऑर्डियल, तब तक वो जो है वो सदा उसको विक्टिम के लिए प्रॉब्लम ही रहेगी। नेक्स्ट है कि जो जितनी भी स्कीम है, क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन पे बहुत स्कीम्स हैं,
हाई कोर्ट्स की ऑर्डर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टेट सोशल वेलफेयर स्टेट है, बहुत कुछ है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। चैलेंज ये है कि उनको ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मैंने जैसे अभी सर ने कहा था कि मैं कहता हूं कि हमारे पास हर चीज के लिए लेजिस्लेशन है। आई मस्ट से कि वी आर ओवर लेजिस्लेटेड बस लेस इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ही चैलेंज है। अगर वो हो जाए तो सारा कुछ ही उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं विक्टिम के, एक छोटा सा ग्रे एरिया आता है। एफआईआर दर्ज हो गई, आईओ को पुलिस वाले को विक्टिम मिल गई, एफआईआर दर्ज हो गई, अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाला चल पड़ा, तब से लेके पुलिस रिमांड और बेल तक के बीच में विक्टिम की कोई भी विक्टिम को सहयोग करने वाला नहीं है। प्रोसिक्यूटर कहता है मेरा रोल तब स्टार्ट होगा जब अक्यूज्ड अरेस्ट हो गया है। अगर पीसी लेना है तो मेरा रोल है, अगर पीसी नहीं लेना तो पीपी तो अपना बैठा रहेगा। तो ये इतना जो ग्रे एरिया है उसमें स्टेट कैसे अपने विक्टिम को पहचानता है, संभालता है, वो भी एक देखने वाली बात है। और इसमें जितने स्टेक होल्डर हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, तो जुडिशरी तो लेट स्टेज पे आती है, इनिशियल स्टेज पे, या सोशल सेटअप में या सोशल डिपार्टमेंट है, उनका जब तक आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उस सारे कोऑर्डिनेशन के बिना जितनी हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जो आज सारा कुछ सोच रहे हैं, वो पूरा नहीं होगा। अब मैं आता हूं कि लिमिटेशंस क्या है और सजेशंस क्या है। चैलेंजेस, लिमिटेशंस एंड सजेशंस, उसमें मुझे जो सारा लगता है, मैं क्योंकि बीइंग प्रोसिक्यूटर मुझे ये भी लगता है कि मैं कहीं उसके बारे में ज्यादा बायस ना हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, हालांकि आपने खुद ही माना है कि ये नए जो कानून इंप्लीमेंट होंगे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। तो विक्टिम के लिए भी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो स्टेक होल्डर हैं वो कंप्लीटली फुली इक्विप्ड नहीं होते तो वो स्कीम जो है कभी उतनी लागू नहीं हो सकती। और तीसरा इसमें ये है कि जिस तरह से ऑलरेडी हमारे पास पॉक्सो के, एससी एक्ट के काफी सारी गाइडलाइंस हैं, वो चाहे विटनेस के लिए हैं बट उनमें प्रॉब्लम, उनमें चैलेंजेस फिर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है। मैन पावर की भी मैं कई बार एक बात सुनाता हूं, क्या होता है कि आप बैंक चले जाओ, सर टीचर कम है, कोर्ट जाओ तो पीपी कम है, जज साहब कम है, थाने जाओ तो पुलिस वाले कम हैं, और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस चले जाओ तो सारे के सारे बेरोजगार हैं। तो ये जो गैप है कि पॉपुलेशन है, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन हर डिपार्टमेंट कह रहा है कि मैन पावर नहीं है, ये गैप भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे बढ़ना है। इन सभी के साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने अच्छे ढंग से इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, इस तरह का मौका हमें फिर मिलता रहेगा। और मुझे लगता है कि इतने सेंसिटिव सर भी जरूर होंगे, इनके थ्रू डायरेक्टर सर, इनके थ्रू मिनिस्ट्री तक ये जरूर होंगे कि कभी ना कभी हमें ये न्यूज़, ये खुशखबरी जरूर मिलेगी कि प्रोसिक्यूशन एकेडमी भी शुरू होने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।